मैं जयप्रकाश भांगड़िया सागौर पीतमपुर सागौर से। मेरी श्रीमती का रेटिना का पर्दा खसक गया था, कुछ धुंधला दिखने लगा और हमने तुरंत आकर यहाँ चौधरी हॉस्पिटल में बताया डॉक्टर शाह साहब को। उनने बहुत बढ़िया इलाज किया और आज हम अच्छे हैं और बढ़िया। मेरी श्रीमती गीता भांगड़िया का ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ और उसको बहुत बढ़िया दिख रहा है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद है। चौधरी हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का धन्यवाद है। सभी का नेचर बहुत बढ़िया है और आगे किसी को कोई तकलीफ़ हो तो इस हॉस्पिटल में आने में कोई तकलीफ़ नहीं है। हमको रोहन भैया के माध्यम से यहाँ पहुँचे और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बस बेस डॉक्टर साहब का धन्यवाद देती हूँ, पूरा स्टाफ को धन्यवाद देती हूँ चौधरी नेत्रालय के। मेरा ऑपरेशन सक्सेस हुआ और मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Hi, I am Dr. Daivat Shah. So this case, when this lady came to me, she had diminution of vision in one eye and it was sudden in onset and it was painless. So when I examined her, she had a near total retinal detachment, and when I looked at the fundus, the break was just posterior to the equator on the temporal side. So she had an opinion for a scleral buckle from elsewhere. Whenever the break is a little posterior to the equator, in these cases, I personally tend to prefer a vitrectomy with an oil or a gas tamponade depending on the condition. There are two reasons for that. Sometimes the edge of the break lies on the edge of the buckle and we do not get a depression as we wish for. So that is reason number one. And second reason, in pseudophakic patients, I tend to go for vitrectomies because sometimes in the periphery there might be some breaks. So a vitrectomy with an ora to ora dissection can take care of that. So now the silicone oil removal is done and the patient has regained 6 vision. This vision was because again the patient was operated 4 days after the retinal detachment, so the integrity of the foveal receptors was great. And second is she was extremely compliant with the treatment, the follow-ups, and we had put oil initially and we removed the oil after 10 weeks, I think. Yeah, so no problem of emulsification, no problem of secondary glaucoma, and the patient is absolutely happy today and is good for life. Thank you very much.